Vice Chancellor sir, Professor Jaspal Singh ji, Dr. Lahel, Madam, and Singh. Can I speak in Hindi also? Okay, thank you. So I'll mix that one. मैं आपसे कुछ थोड़े चीजें साझा करूंगा। मैं भी थोड़ा पंजाबी बोलना सीख गया हूँ थोड़ा। मैं थापी यूनिवर्सिटी में 1997 में ज्वाइन किया था और मुझे याद है अभी भी 1999 में just after joining थापी यूनिवर्सिटी, just after 2 years, I was appointed head of the computer science department. And I remember one day, the director of my institute, Professor Kapoor, called me. नीचे आओ जल्दी, उनका मेरा ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पे था, ग्राउंड फ्लोर पे, नीचे आओ जल्दी। देख अभी डॉक्टर ओम विकास का फोन आया है EDIL से, दिल्ली से, और हमें एक प्रोजेक्ट देने के लिए जाना है। I remember. So I joined that department since probably 6-7 months back only, and then I thought, how will I be doing all these things? And I remember that I went with Professor Lal and 2 more colleagues to Delhi in one Omni. I remember it was Omni, even this day I remember that. And then that project came, and then Professor Lal was with us for a brief period of 3 years, and then yes, let me admit this, that had he continued with us, probably all these things would have been at our level. Am I right? But anyways, probably all of us actually are working for the development of the country. If I'm taken correctly. Ultimately, somehow or the other, the economy of my country, the people living in my country, they should live a better life. Ultimately, whatsoever we are doing, even if we are doing something on Diaspora, we are doing some studies on that. So whatsoever efforts we are doing, probably Vice Chancellor sir will agree with me, is this, that we want to improve the lives of the people in our country. And इनके वहाँ से आने के बाद थापी यूनिवर्सिटी से, then probably there is a small group that continued those efforts, not of that level, but those efforts are there at some level in थापी यूनिवर्सिटी even now. And we have done something different than now they are doing. I thought, I don't know whether I'll be putting the picture correctly or not. I remember I went to one of my classes one day at the university to my MCA students. I was very happy. बड़ा खुश था मैं। क्यों? I read in the newspaper that day that the cost of $1 is ₹50. Rupees 40, and it has come down by 10 rupees. And probably on that day last 2-3 months. And I thought that it will continue, and it will go down, and probably I'll have $1 equal to 1 rupee, and then I'll not even think of going to USA anytime. But that has not happened. I have worked there for 19 years now, and my daughter, she has passed from Thappi University in BTech. She has done BTech Computer Science from there, working in Bengaluru, and I am asking her to go to US for doing masters, for doing her MS. So this is another aspect, another important point. We all of us probably, who are actually in that particular space, who can afford to send their wards for higher studies abroad, we are doing that.
I'm admitting this fact that I'm also interested that my daughter goes to do MS from US. But is this really a good idea, good point for a country? Not really. I mean, why are we not able to give that kind of education to our kids here in this country itself? It's not happening. So, my point is simple, sir, that we should create the environments. I mean, these efforts are really great in the sense that we are doing the things that combine us, and probably that will help in having a better future for our next generation. I noted some points here that we should all. I mean, we are proud of having this fact that we have developed a lot many things. But in spite of that, there are some gaps. Probably all of us should admit that. I'm not saying the gaps related with this lecture. Probably I'm talking the technical development in my country as a whole. That technical development, I mean, this development is through IT-enabled idea, but IT is actually playing a role in the development of each and every field these days. Not only in spreading the idea of language. Yeah. This has a very different level as of this day. I'll share, I mean, you all probably might be listening to the news that have come recently. The surgical strikes, and yesterday also something happened. Okay, has anybody thought of that? Why was the strike in Pathankot continued for 3-4 days? What was the reason? See, the computer science, there are some persons from computer science area here, that we don't have a technology of having good thermal images. We don't have. USA is having that technology. They can, if somebody has a camera, and then one can actually see the images here of this particular room from a distance, 100 meters, 200 meters distance. They have that technology. At least the movement that can be seen. We don't have that technology. So probably the IT, the people who are working in IT, they have a very, very different role to play these days. That innovate those things which actually we need. I mean, I'm not again saying that we are not doing anything. We are great persons in my country. We should also, as Dr. Lahal is doing really great work. There are persons who are doing really great work in our country, and I noted that name of that satellite, which actually recently helped in that surgical strikes. So I mean, I noted that from one of the news channels only. So in June 2016, we actually had, sorry, I'm missing that. There was one satellite launched in June 2016 by ISRO, and that helped in taking the images of those camps, COSART C. So that helped in actually identifying the actual movements with a resolution of 0.65 meter. So 0.65 meter means that movement of a human being can be tracked. So this is the technology that we had developed recently and then used that here. So I mean, probably my message is simple, that I mean, why we cannot have those kinds of things in my country developed fast. I analyze the reasons also for this. I do that kind of analysis many times. Why are we? We are great minds. We say that Bharat जो है बहुत महान लोगों का देश है. But what is the point that is keeping us behind? I share this. It is lectures which I believe are wherever I get a chance here, that the Indians specifically are not that great in sharing the knowledge.
And when it comes to the point of actually giving the credit to fellow colleagues, we are even at a different level. Now see, if I know, I mean, probably some of them, you all of them might be knowing that once Dr. Kalam was, when one missile was not successful, missile launch was not successful, he went himself and took all the wrong credits. And when there was success story, that he used to set others to take the credit. I mean, we need to have these kind of things. I'm 50 years of age, probably you are even elder than me, but there are young minds here sitting. Those who are in their 30s, 40s, they should take this idea that we will perish one day. I mean, nobody is for a very, very long time here in this world. We will go somewhere at a specific date and time mentioned, fixed for us. But we should actually do something good for the society. And keep on sharing the knowledge. If you keep on sharing the knowledge, then only the knowledge will actually prosper us, and then only the knowledge will be at that level that it is more and more useful for the citizens of this country. With these words, I take this opportunity to thank Madam Diaspora for giving me this opportunity here for sharing the words that I had in my mind. I also thankful to Vice Chancellor sir for having these kind of ideas propagated and having the support for these kind of developments as far as the diaspora is concerned, and also the technical development of language is concerned. Thank you so much, sir, and thank you, Professor Lahar, for the nice words. Thank you so much, and wish you all the very best. Thank you. Shukriya, sir. बस असी थोड़ा समा लवांगे दो इस तो पहला कि मैं वाइस चांसलर जी ने प्रधानगी भाषण की गुजारिश करा दो छोटी छोटी तैयारियां रस्मां करनियां नहीं उन्होंने पहली तो है कि जी contribution was Punjabi diaspora to Indian and world agriculture by Dr. M.S. Khan. Second one is conflict management in Indian diaspora, a saga of uprooting and rerouting by Dr. Anjali. Token of love and respect. और दूसरा साढ़े अज के विशेष मेहमान वालों साढ़े को आए खास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शर्मा जी ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰੂਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਟਰੇਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਟੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ particularly for organizing this lecture. And as we have seen that last 3 lectures have been printed by the Publication Bureau, and we have released them for wider publicity of the lectures. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ UGC ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਲਾਲ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ और उस वेले किया है जो इस काम की बहुत सख्त लोड़ है और फिर मैं लंबे समय तो देख रहा कि गुरप्रीत लैल कला नहीं है इट इज़ ए टीम वर्क नंबर ऑफ
professors and research associates and other people are there with him. और बहुत सारा काम जिहड़ा है वो हर 6 महीने बाद हर साल बाद कोई ना कोई नवी गल होंदी है। साडे वास्ते बहुत वड्डी गल है। मैं कई बार कहना कि अगर असीं ये काम ना करते कंप्यूटर वाला तो असीं पछड़ जाना सी। मनु चंगा लगे ना लगे, मनु कंप्यूटर घट आंदा होवे या ना आंदा होवे वो वक्री गल है। पर जे मैं कंप्यूटर के हवाले नाल लैंग्वेज का काम ना करा, सभ्याचार का काम ना करा तो मैं दुनिया के नक्शे ते पिछे रह जावांगा। तो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बड़ा काम जिहड़ा है वो साडा इस सेंटर ने कीता है। और मैनूं खुशी है कि असीं बहुत सारे पंजाबी लैंग्वेज लिटरेचर और साहित्य के हवाले नाल बहुत कुछ कंप्यूटर के हवाले नाल कर चुके हैं, कर सके हैं। रिसेंटली जस्ट 3-4 डेज बैक असी अपनी यूनिवर्सिटी वालों जो अखर है उसनों सेंटर अपना पंजाब सरकार और पंजाबी यूनिवर्सिटी वालों सांझे रूप में चंडीगढ़ उसकी प्रजेंटेशन भी प्रोफैसर गुरप्रीत लैल ने दी। और बड़ी खुशी की गल है कि सारी ब्यूरोक्रेसी पंजाब की हॉल च बैठी सी एंड दे वर इट वाज सॉर्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट नहीं रिफ्रेशर कोर्स, एक तरीके का उन्होंने ओरीएंटेशन या रिफ्रेशर कोर्स हो रहा है। उन्होंने पता लग रहा है कि इस तरह का भी सॉफ्टवेयर अखर वर्गा जिसकी उन्हें थोड़ी जी डिमॉन्स्ट्रेशन असी देखी है। और मैं लगता है कि ब्यूरोक्रेसी को बहुत बहुत अच्छा लग रहा सी। एंड आई थिंक वी हैव टेकन ए डिसीजन ऑल्सो दैट आफ्टर द अखर वाज रिलीज इट वाज डिसाइडेड टू हैव ए वर्कशॉप ऑफ फ्यू डेज, क्योंकि खाली रिलीज करने नाल एक बार देखने नाल काम नहीं बनना। जिहड़े लोगों ने कंप्यूटर से काम करना है तो अगर उन्होंने कोई रिफ्रेशर कोर्स या कोई वर्कशॉप ना लाई गई तो वो गल शायद अद्धी अधूरी रह जाए। तो दैट डिसीजन वाज आल्सो टेकन ऑन दैट डे इन प्रेजेंस ऑफ द चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब गवर्नमेंट दैट दे विल हैव अ सॉर्ट ऑफ वर्कशॉप ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। एक तो ये गल मैं बहुत अच्छी लगी और दूजा अज जो लैक्चर से इसका भी खास मकसद है वो लैक्चर असी सुनिया और उसदे जिहड़ा बाकी गल जी सॉफ्टवेयर वाली है और होर गल्लां ने अखर वाली वो गल होर है। पर जिहड़ा पंजाबी लैंग्वेज पढ़ाउण दा पंजाबी अखरां नाल राबता कायम करन दा बच्चियां दा और अंग्रेजी के हवाले नाल और गुरमुखी स्क्रिप्ट के हवाले नाल बहुत अच्छी प्रजेंटेशन मैनूं लगी। मैं सगों पूछ रहा सीगा कि इहदे विच कोई माड़ी मोटी साहित्यक तौर पर अखरी तौर पर कोई गलती ना रह जाए उसका जरूर ध्यान रखा जाए। पर द प्रजेंटेशन इज रियली वेरी इंप्रैसिव एज पर एज जिहड़ा साडा ऑडियो वीडियो मीडियम हैगा उहदे हवाले नाल मैनूं बहुत अच्छी लगी। और मैनूं लगता है कि अगर बच्चा उन्हें देखेगा तो गल तो असल में ये है कि पढ़ा तो असीं सारे लवांगे पर जिस गल नूं बच्चा बड़े इंटरस्ट नाल उन्होंने फॉलो कर लवे और उन्होंने चंगा लगे बार बार देखना और उहदे नाल उन्होंने लैंग्वेज आ जाए अखर आ जाए ये साडा मकसद है। और मैनूं लगता है कि 1 नवंबर को जो असी 50वां साल अपने पंजाबी सूबे का मनाना है तो पंजाब सरकार और पंजाबी यूनिवर्सिटी ये जड़ा साडा नवेकला हुकम है साडे डिपार्टमेंट का ये भी उस दिन शायद कर सकीए आपां इहो जिहा प्रोग्राम बनाया जा रहा है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर साडी मैं कई बारी जदों भी पाकिस्तान गया तो उत्थे पाकिस्तानी हुण तां माहौल होर तरह का हो गया जिद्दां दा अजकल माहौल है। पर गुजरात यूनिवर्सिटी मैं गया, लाहौर यूनिवर्सिटी गया, सारे कहते जी वो वाला जो सॉफ्टवेयर है जी वो शाहमुखी गुरमुखी वाला उर्दू पंजाबी वाला वो सानू दवा दो। तो मैनूं लगता है कि एक बहुत अच्छा फैसला और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर जो है वो क्रिएट होया और हुण होर बहुत सारे सॉफ्टवेयर बन गए ने। आई वॉज लिसनिंग टू प्रोफैसर आर.के. शर्मा जी है ना, तो उन्होंने तो बहुत बहुत दूर की गल भी की है कि किस तरह देश की सिक्योरिटी देश की सॉवरनिटी इंटेग्रिटी विच जिहड़ा IT है IT सैक्टर कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है। और अज के दिन जदों होर सारे उहिओ काम करके इंटेग्रिटी और सॉवरनिटी खोना चाहते हैं
उस वेले अगर असीं पछड़ जावांगे तां सच्ची गल है कि फिर साडा नुकसान हो सकता है। जदों बोल रहे सन ते मैनूं लग्या कि मैं भी कोई सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट करने विच मदद करा, तो मेरे मन च आया कोई इहो जिहा सॉफ्टवेयर बने कि बंदा अगों बंब लैके आ रहा है और मैं बटन दबावां तो बुढ़े शाह गाना शुरू कर दे, ਉਹਦਾ ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬੂਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਟਨ ਦਬਾਵਾਂ। So something like that has to be ultimately evolved। क्योंकि ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜੋ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਤੂੰ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਬਣ ਸਕੇ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਸੂਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। अगर बंदे का कोई इस तरह का आप ईजाद कर सकीए ना, तो फिर बहुतियां सारियां समस्यावां जिहड़ियां ने वो पैदा घट होणगियां, नहीं होणगियां, तो फिर सानू उन्ने सारे सॉफ्टवेयर इधर बनाने की लोड़ घट पेगी। जे सारे रल के एक ऐसा कोई सोच रहा ना, आप कोई जल्दी नहीं है ना, तो मनु लगता है कि जो पंजाबी के हवाले नाल और लैंग्वेज और लिटरेचर के हवाले नाल साडी यूनिवर्सिटी का मैंडेट है, उहदे काम दी मैं बहुत मुबारक दिंदा गुरप्रीत लहल नूं। और जिहड़ा साडा डायस्पोरा सेंटर है, मैनूं लगता है ये फैसला बहुत वधिया है कि डायस्पोरा सेंटर और जिहड़ा कंप्यूटर सेंटर है, क्योंकि बहुत सारा साडा जिहड़ा डायस्पोरिक वर्ल्ड है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। तो बहुत अच्छा है डिसीजन है। मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत मुबारक दिंदा और आस रखदा कि साडा डायस्पोरा सेंटर एंड कंप्यूटर सेंटर they will have some sort of arrangement for long term programs as far as computer and software and other ਜਿਹੜਾ technical aspect है that is concerned. Thank you very much. शुक्रिया सर, बहुत बहुत ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੇਰਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਫੋਨ ਥੈਂਕਸ ਕਰ। मानयोग वाइस चांसलर साहब, डॉक्टर गुरप्रीत, डॉक्टर आर.के. शर्मा, डॉक्टर जसविंदर और सारे फ्रेंड्स, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ मैं आवांगा तो सही पर डायस्पोरा है की चीज़, कहते बड़िया बीमारियां डायरिया डूरिया, ये डायस्पोरा की है। जो मैं क्या कुछ नहीं आ गल है, कहते ये तो सारे असी यही ही काम करते हैं सारे डिपार्टमेंट्स ने, कहे तो कोई खास गल नहीं है। सो एक तो इस सेंटर की जी खासियत है UGC वालों निश्चित कि इंटरडिसिप्लिनरी है और असी कोशिश करते हैं कि चाहे कोई लैक्चर करिए, चाहे सैमीनार करिए, कॉन्फ्रेंस करिए, असी हर बार कोशिश करना है कि अड जेडे इशूज़ है प्लस अड जेडे डिपार्टमेंट्स है उन्होंने अपने नाल जोड़िए और असी इस विच बहुत सफल हुए हैं। और जी गल हुणे डॉक्टर साहब ने लास्ट विच कही है, साढ़े सामने एक एग्जाम्पल है डॉक्टर मैडम हरकिरण, शी इज़ टीचिंग इन थापर, कंप्यूटर की लेक्चरर है और ये काम कर रहे हैं कल्चरल कंप्यूटिंग किवें हेल्प कर सकती है फर्स्ट सैकेंड एंड थर्ड जनरेशन सिख डायस्पोरा नूं जोड़न लई। और इंसीडेंटली ये जिहड़े सुपरवाइजर है डॉक्टर कमलजीत है तो मैं को सुपरवाइजर हाँ, तो डॉक्टर कमलजीत कहते मैं तो देखो जी कंप्यूटर का मैनूं आंदा नहीं, फंक्शनल जांदा,
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗਾ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭੋ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਗਰਲ ਯੂ ਨੋ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ IT ਐਂਡ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖੁਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਯੂ that we feel encouraged. Again, I am really grateful to everybody for accepting our invitation and coming here. और future ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। और खास धन्यवाद है डॉक्टर गुरप्रीत लैल का, डॉक्टर RK शर्मा, रियली ग्रेटफुल टू यू। और डॉक्टर शर्मा मैं मिल पहली बार रही हूँ, फोन पे तो पता नहीं पिछले 15 दिनों तो बहुत गल हुई। मैं क्या देखिए किहड़े डॉक्टर RK शर्मा, डॉक्टर जसविंदर कहते मैं तो मिलिया नहीं, मैं पछाणदा नहीं। मैं क्या मैं भी नहीं मिली, पछाणदी नहीं। सो फोन पे पूछ लांगे तुसी हो। सो दिस इज हाउ इट इज एंड रियली ग्रेटफुल डॉक्टर लैल for connecting us to Dr. Sharma and coming here. I hope everybody enjoyed it. Thank you so much.